गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज डॉक्टर पूर्णिमा माथुर और आज हम डिस्कस करने के लिए लाए हैं थिन एंडोमेट्रियम। थिन एंडोमेट्रियम इज मोर लाइक एन एनिग्मा टू अस। लाइक सब कहते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग योर जब आप सिर्फ एग बनने वाली मेडिसिन ले रहे हो, और इफ यू आर अंडरगोइंग एन आईयूआई साइकिल और ड्यूरिंग योर एम्ब्रियो ट्रांसफर आईवीएफ साइकिल, सम ऑफ यू माइट हैव कम अक्रॉस कि किसी ने बोला अंदर लाइनिंग कम है और द एंडोमेट्रियम इज थिन, और दीवार जो है गर्भाशय की दीवार जो है जो परत है वो अच्छी नहीं बनी है। सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस टुडे कि ये थिन एंडोमेट्रियम है क्या। वील ब्रीफली टच व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेस, किस वजह से होता है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट मोडालिटीज। सो एंड हाउ डज इट मेजरली अफेक्ट द फर्टिलिटी आउटकम। सो अगर हम देखें व्हाट इज एन एंडोमेट्रियम, तो एंडोमेट्रियम जो है आपके यूट्रस के अंदर की लाइनिंग है, वो लाइनिंग जहां पर फाइनली आकर आपका एम्ब्रियो और आपका गर्भ आकर चिपकता है। दिस इज द टिश्यू जो आपको पीरियड्स जब आते हैं तब ये लाइनिंग आपकी शेड ऑफ होती है। इट कैन बी थॉट ऑफ एज अ लेयर्स ऑफ टिश्यू दैट बिल्ड अप अलोंग द इनर साइड, यूट्रस के अंदर जो बनती है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इट टू रिसीव द एम्ब्रियो, और गर्भ को चिपकाने की जो तैयारी करता है गर्भाशय। सो अगर हम देखें, इन ऑर्डर टू हैव अ नेचुरल कंसेप्शन, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि एक एग हो, स्पर्म हो ऊपर जाके जो एग से मिले एंड एम्ब्रियो फॉर्म करे, एंड दैट एम्ब्रियो जो है वो ट्यूब्स में फॉर्म होके ट्रैवल करके यूट्रस में आके स्टिक करता है टू ग्रो फर्दर 9 months के लिए टू मेक द बेबी. So in order to have a natural conception, we want a good quality egg, good sperm, tubes open, and the uterus should be normal. उस यूट्रस की हेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर पैरामीटर होता है दी लाइनिंग और दी एंडोमेट्रियम, वेयर इवेंचुअली हमारा एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है, स्टिक करता है एंड ग्रो करता है। सो अगर हम देखें हाउ इज इट असेस्ड, हाउ व्हाट इज दी लाइनिंग। नाउ ये जो एंडोमेट्रियम है और अंदर की दीवार है, दैट इज इन फेज, इट ग्रोज इन फेजेस। उस पर अलग अलग हॉर्मोन्स का अलग अलग इम्पैक्ट होता है। अगर हम देखें इन द इनिशियल, आपकी जो फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल है, जब आपका एग और जो बीज है दैट इज गेटिंग रेडी प्रेगनेंसी के लिए बन के तैयार हो रहा है, दैट इज व्हेन द लाइनिंग स्टार्ट्स ग्रोइंग, दैट इज हमारा जो प्रोलिफरेटिव एंडोमेट्रियम है। एंड अगर उसकी मॉर्फोलॉजी को हम देखें तो उसमें ऐसे, अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, द लेफ्ट वाली जो इमेज है 3 लेयर्ड नॉर्मल ट्रिपल लाइन एंडोमेट्रियम देखता है। सो इसकी थिकनेस ग्रो करती है 1 to 2 mm पर डे पे हमारी। एंड ऑन द डे जिस दिन आपका एग रिलीज होने वाला है और आपको इन एन आईयूआई साइकिल ट्रिगर दिया जा रहा है, और ड्यूरिंग एन ओवेरियन स्टिमुलेशन साइकिल आईवीएफ साइकिल पे हम ट्रिगर देते हैं, दैट ऑन द डे ऑफ ट्रिगर लाइनिंग शुड बी एट लीस्ट 7 millimeters. That is what is our parameters are. Now if it is anything short of 7 millimeters, that is where we classify as thin endometrium. Now endometrium के इफेक्ट में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, उसकी थिकनेस, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी बनावट कैसी लग रही है, उसकी इवननेस है कि नहीं है, उसका ब्लड फ्लो कैसा है, ऑल डिफरेंट पैरामीटर्स जो हमें बताते हैं वेदर मेरा एंडोमेट्रियम हेल्दी है कि नहीं है। Whatever mode of conception, natural IUI, IVF, eventually हमारा बेबी यूट्रस में ग्रो करता है। So we want a good and healthy endometrium for all sorts of modalities of treatment. So the different parameters जो हम assess करते हैं उसमें से the most important parameters and the most commonly assessed at every level is the thickness of the endometrium. If agar on the day of trigger it is less than 7 mm, it would be classified as a thin endometrium, which you can see on the right side of the screen. So how do I know whether I would be expecting a thin endometrium in my cycle or not? So one is, agar aapko regularly scanty flow hota hai, say for instance you have, aapko periods mein flow 1 or 2 days hi hota hai, 1 or 2 pads per day only, or at times you have persistent complaint कि मुझे pelvic pain रहता है, प्रोलॉन्ग पीरियड्स होते हैं जब हमें साइकिल्स होती हैं जब हमें पीरियड्स नहीं आ रहे, फॉर 2 months 3 months हमें पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, और साइकिल्स आर वे इरेटिक, वेरी इरेगुलर, हमें फॉर नो रीजन इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। एट टाइम्स विदाउट एनी सिम्टम्स यू कैन बी डायग्नोज्ड विद थिन एंडोमेट्रियम। मोस्ट लाइकली इट वुड बी कि आप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट जब आप जाते हो स्कैन कराने के लिए, व्हेन यू आर गेटिंग योर ओव्यूलेशन स्टडी डन और आपका स्टिमुलेशन चल रहा है एंड आपका फॉलिकल ग्रो कर रहा है, दैट इज व्हेन आपके ट्रीटिंग डॉक्टर विल पॉइंट इट आउट कि हमारी लाइनिंग जो है एज कंपेयर टू द एग इज नॉट ग्रोइंग वेल इन सिंक्रोनी, और उसकी थिकनेस इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर द
growth of the follicle. So उसके causes अगर हम देखें तो what can be the different causes? So the most important one is the surgical cause. अगर रिपीटेड डीएनसी हुई हो, से फॉर इंस्टेंस यू हैड पहले कोई अबॉर्शन हुआ हो जिसके लिए आपने क्यूरेटिंग कराई हो, या डीएनसी कहते हैं, या सक्शन इवैक्यूएशन, अगर वो डीएनसी का प्रोसीजर बार बार होता है, या जब हमने करवाई हो डीएनसी तब जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं आपके, उन्होंने बहुत ही अग्रेसिवली डीएनसी की है, कभी कभी इन सर्टेन रूरल सेटअप्स और इन इनएक्सपीरियंस्ड हैंड्स, इन ऑर्डर टू इवैक्यूएट द प्रोडक्ट्स कंप्लीटली थोड़ी सी अग्रेसिव क्यूरेटिंग हो जाती है, विच कैन डैमेज द बेसल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम जिस बेस से जहाँ से ग्रो करता है हर महीने, दैट कैन बी डैमेज्ड विथ रिपीटेड डीएनसीज और अग्रेसिव डीएनसीज. अगर यूट्राइन सर्जरी हुई है जैसे मायोमेक्टमी, अगर इफ नॉट डन प्रॉपरली, और इफ हमारा दी एंडोमेट्रियम जो कैविटी है उसमें हमें ओपन करना पड़ा एंड इट इज डैमेज, इट कैन लीड टू अ थिन एंडोमेट्रियम. देयर आर डिफरेंट प्रोसीजर्स जो हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए यूज होते हैं, लाइक एंडोमेट्रियल अब्लेशन. दे कैन ऑल्सो लीड टू थिन एंडोमेट्रियम लेटर ऑन इन द लाइफ. अगर हमें रिपीटेड इन्फेक्शंस हुए हैं, कैन बी सिंपल pelvic infection or maybe tuberculosis. These TB being the most common in Indian setup, they can affect the endometrial lining and lead to thin endometrium. अगर हमें for any pelvic cancers or any other cancers radiotherapy हुई है where your pelvic organs are exposed, तब हो सकता है. एडवांस्ड एज में हो सकता है. अगर हमारे ओवेरियन इनसफिशिएंसी, हमारे एग्स जल्दी खत्म होने वाले हैं तो हो सकता है. और प्रोलॉन्ग यूज ऑफ मेडिसिन लाइक प्रोलॉन्ग यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इनकी वजह से भी थिन एंडोमेट्रियम हो सकता है. तो थिन एंडोमेट्रियम जब हम कहते हैं, दे कैन बी ईदर मेरी लाइनिंग, हमारी जो एंडोमेट्रियम है उसकी बेसल लेयर इज टोटली डैमेज्ड, वेयर वो जहाँ से हर साइकिल में रीजनरेट होती है. इफ वी अंडरस्टैंड जो हमारा प्रोसीजर होता है, लाइक एवरी मंथ जब आपका बॉडी को पीरियड्स आते हैं एंड योर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट्स वर्किंग टुवर्ड्स अ प्रेगनेंसी, एक एग जब ओवरी में फॉर्म होता है, इट गिव्स अ मैसेज टू द यूट्रस की लाइनिंग डेवलप करने के लिए. नाउ फ्रॉम द बेसल लेयर ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग डेवलप होनी शुरू होती है, ग्रो करती है, एंड रीचेस ऑन एन एवरेज एटलीस्ट 8 to 9 mm के आसपास ग्रो करती है till the egg is released. Now, if there can be reasons where हमारा the basal layer is absolutely damaged as an infection, or it is not getting an adequate signal to grow further. What is the exact pathology behind the thin endometrium in a particular patient? That needs to be evaluated. So one of the most common pathology that comes across is the Asherman syndrome. जैसे the first and the most important reason हमने discuss किया था is multiple surgical procedures, अगर multiple DNCs हुई हो और ablations या surgeries हो. So when ऐसी surgeries होती हैं, or at times due to pelvic infections as well, there are adhesions, या हमारी uterus को अगर हम 3D में देखें, it is like a cavity which opens up to bring in the embryo को implant कराने के लिए. Now there come adhesion between the two walls of the uterus. जब दो एंडोमेट्रियल वॉल्स में हमारे adhesions आ जाते हैं या चीज़ें वो चिपकने लगती हैं, उनके बीच में fibrous bands आ जाते हैं, and these adhesions are known as the Asherman syndrome. Because of these adhesions हमारी uterine cavity expand नहीं हो पाती, lining grow नहीं कर पाती है. So this is known as Asherman syndrome, which needs detailed evaluation, a patient approach कि हम उसको, it takes time to correct it. It can be corrected surgically and then it is treated. So how do we diagnose it and evaluate it? So the most common way is with a transvaginal ultrasound. You come for your routine follicular monitoring, or आप stimulated हो आपके ovaries, we have a good follicle in the ovaries, we can see, and हमारी uterus की lining at that point of time is less than 7 mm, which monitored in subsequent cycles, अगर हमें persistently हमें it is not growing beyond 7 mm, it can be diagnosed as a thin endometrium. When it is a thin endometrium, the patient needs further evaluation so that हम pinpoint कर सके what exactly is the cause which is leading to it, so that adequate correction can be offered. When हम suspect करते हैं कि lining thin है, we need to rule out the Asherman syndrome. The gold standard in that case would be a hysteroscopy, जिसमें हम एक कैमरा डाल के देख सकते हैं, and when we come across adhesions, they can be corrected at the same time.
बट अगर वी आर इन अ lower limited resources setting में हम हैं, where we do not have access to hysteroscopy, or at times when the patient is not willing to undergo something invasive due to financial constraints, हम अगर सिर्फ सोनो हिस्ट्रोग्राफी करें, दैट इज लाइक अ सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी हम जब करते हैं, वी पास ऑन सलाइन into the cavity and evaluate it on an ultrasound, that can also give us an idea about the Asherman syndrome or any other adhesions that are present in the uterine cavity. So, what are the different treatment options that are available for thin endometrium, and how does thin endometrium impact our fertility treatment? Because हमें पता है the eventually whatever mode of treatment we are having, हमारा जो एम्ब्रियो है और द बेबी इन लेमैन लैंग्वेज जो फिटस है, एम्ब्रियो को आके स्टिक करना है इन द यूट्राइन कैविटी. सो if our lining is thin, it can significantly impact our fertility outcome. The chances of conception are reduced. It is not that कि अगर हमारा 7 के नीचे होगा तो हमें प्रेगनेंसी ही नहीं होगी. जैसे मैंने इनिशियली मेंशन किया था, there are different parameters that are used to assess the endometrial lining, including उसकी thickness के अलावा what is the morphology, what is the blood flow, any irregularity. So ये सब कुछ जो है overall हमें help करता है in assessing the quality of the endometrium. So it is said कि preferably it should be at least 7 on the day of trigger. If it is less than that, that is we are expecting thin endometrium and the chances would come down. There have been incidences and cases where we've achieved pregnancy even at 6.5 but then there come other factors that play their role as well. So we know because the eventual place of growth is the endometrium, it is going to impact. Now, if somebody comes to us with a thin endometrium, the patient needs a detailed evaluation, a detailed history. की history पहले कभी tuberculosis हुआ है, recurrent pelvic inflammations होते हैं कि नहीं होते, any other surgeries that have been done in the past, or any other hormonal treatment that she has been taking off and on. So after the detailed evaluation, we go history, we undergo physical evaluation. Physical evaluation में हमें पता चलता है for any infections that are present in the body, any vaginal infections, any PID that we are suspecting, कोई discharge है कि नहीं है. Followed by a transvaginal ultrasound that we've talked about. Then a hysteroscopy would be a gold standard which will help us know what exactly is happening inside. Now, when we undertake a patient for hysteroscopy, we would be evaluating the endometrium. Are there any infections in the endometrial cavity? हमारे endometrium में infected, whether tuberculous changes are there, or there's a chronic inflammatory. Is there any septum that is affecting? हमारी basal layer कैसी है? How is the vascularity? And if there are any adhesions, हम उसी समय correct करने की कोशिश करते हैं. So at the same time, apart from hysteroscopy, which is both diagnostic as well as therapeutic, मतलब हमें वो problem को diagnose करने में भी help कर रही है and treatment offer करने में भी, what are the different things that we can offer? So one is a hormonal therapy, because हमारा जो follicle growth, that is the hormone estrogen, that plays a significant role in the initial formation or building up of the endometrium. वो estrogen is secreted by the follicles when it is growing. So when we feel there can be an inadequate secretion of estrogen, which can be in turn responsible for thin endometrium, we supplement the patient with hormones, with estrogen tablets, estrogen patches, estrogen gels, which help us achieve a better thickness of the endometrium. For somebody who is undergoing an IVF cycle and we are find the endometrium thin है, in those cases we would prefer a frozen embryo transfer so that we can work on the endometrium, and only when the endometrium, all the parameters including the morphology, thickness, blood flow, everything is as per our satisfaction, that we go ahead with the transfer so that we can achieve the desired success rate. Now, when we go in and evaluate the cavity, हम hysteroscopy पे पता चलता है कि it is the basal layer which is thinned out or damaged because of infections. So, in that case, there are newer techniques which help in building up of the endometrium. So, there can be PRP. PRP हमने बहुत सुना है, it is widely used in all cosmetology purposes. So, your blood carries certain growth factors which can be separated out as platelet-rich plasma. And it is this platelet-rich plasma which is injected in the subendometrial layer hysteroscopically.
Now, in an attempt to stimulate the growth of the basal cells so that we get a good endometrial thickness. Apart from PRP, हम patient की stem cells collect करके they can be actually injected into the uterine artery so as to improve boost the growth of the endometrial cells, the blood flow. और हम उसको direct subendometrial injection देके hysteroscopically we can also achieve the target. All these things are the different ways where we try to improve the endometrial thickness. But eventually, it is the call of the treating physician, your treating fertility doctor, who can actually guide you regarding where do we stand with the endometrium by evaluating all the different parameters which can help us achieve a successful pregnancy outcome. So, apart from all these, we have the tablets that can be added, aspirin to improve the blood flow, vitamin E, L-arginine, which basically acts as a nitric oxide donor and causes vasodilation and improves the blood flow to the uterine cavity. Similarly, other medicines which improve the blood flow of the subendometrial region to improve the growth of the endometrial lining, like sildenafil, growth hormones, and granuloside colony stimulating factor. These all help us improve the thickness of the endometrium. There are different protocols. At times, agar hamara in a frozen embryo transfer, people are struggling with thin endometrium. So there can be a different protocol, like modified natural cycle protocol can be used to get a desired endometrial lining. We've seen that working for many patients. And it is a call that we take depending upon the cycle, that how is the patient responding to different hormones. At times, because of repeated, now this is something very easily ignored. A patient is repeatedly taking medicines, and eventually you feel कि अच्छा मेरी last 4 months पहले तक तो I was getting a very good lining, अब suddenly मेरी lining कम क्यों हो गई है? That is where we have to think about tachyphylaxis, where हमारी body has actually stopped responding to the hormones and it is asking for a break. So in that case, taking a break for 1 to 3 cycles and then resuming the treatment helps us overcome the tachyphylaxis, and the body receptors, they respond well to the usual dosage of medicines. So this is all about thin endometrium. So thin endometrium, I know, is a big challenge, and जो आप में से अगर who's undergoing through all of this must be very much worried about it. But trust me, if evaluated properly, handled properly after proper evaluation, either hysteroscopically, finding out the cause, and with the help of medical and surgical management, we can achieve a good endometrium to achieve a successful pregnancy outcome. Um, how long does it typically take to see improvements in the endometrial thickness with treatment? So it depends where exactly is the cause. If there is no organic pathology like Cashman syndrome, with proper treatment within 1 to 2 cycles, we should be able to get a good outcome with all the proper supplementations. If it is an Ashman, we need to be patient because Ashman correction it takes 1 or 2 sittings to remove all the adhesions. Then we need to give a break of 3 months before we can resume your treatment. So with Ashmans, we need to be patient for 4 to 5 months. Lifestyle changes or dietary recommendations that can help improve endometrial thickness. Yes, definitely, I believe when you improve your lifestyle, like including a diet which is full of antioxidants, fibers, improving your water intake, getting into an active lifestyle in the form of exercises, yogas. We have pelvic floor exercises which improve the blood flow to the pelvic structures. They do help us improve the endometrial thickness. Obviously supplemented with the medical management. In cases where thin endometrium persists despite treatment, what are the next steps for achieving pregnancy? That's a very good question. If there is a thin endometrium and the treating doctor feels it is not at all receptive to achieve a pregnancy, when we've tried all hormonal treatments, surgery, and different protocols for embryo transfer, in that case, surrogacy can be an option where you can achieve your pregnancy. Thank you so much. This is Dr. Poornima Mathur from Oasis Fertility Vadodara. If you have any queries, please feel free to get connected on the number mentioned below. Thank you.